So today we are again in this very program that is English language or English language and personality development course. So this is the day 18th or lecture 18th of this very program, and we are continuing every day with this process. So I'm trying my level best to come live each day on the very time, although being I should say busy sometime with one or other activity. I just prefer to come live at least for 20 or 30 minutes so that there will be a continuity of this very program. So this is the 18th lecture of this very English language and personality development course. तो आज जो हम करने वाले हैं बिल्कुल आज हम उन चीज़ों के मतलब बात करने वाले हैं ऐसे कुछ मैंने 5-10 सेंटेंस लिए हैं which are most of the time used in our daily conversation और इनके लिए कुछ रूल भी आपको याद नहीं रखना है आज हम कुछ ऐसे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे you have to just remember them or rather you have to understand when to speak these very sentences and you're all set to go and speak these very sentences in a very I should say in a very fluent manner. So आज कुछ 10-11 सेंटेंसेस हमने लिए हैं जो कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में है ना वहां पे बोलते हो और इनको मैंने पहले कहा यू नीड नॉट टू टेक इन कंसिडरेशन फर्स्ट पर्सन सेकंड एंड थर्ड पर्सन यू आर स्पीकिंग योरसेल्फ आपको बोलने हैं ये 5-10 सेंटेंस हालांकि ऐसे बहुत से सेंटेंस है आगे जो क्लासेस होते रहेंगे उनमें ऐसे कुछ सेंटेंस हम लाएंगे और भी वी विल बी टॉकिंग अबाउट फिर हम वर्ड्स पे भी बात करेंगे कि एक वर्ड पे आप कितने सेंटेंस बना सकते हो हैविंग दोज प्रीफिक्स एंड सफिक्स एंड कम विद enhancing your vocabulary और अपनी vocabulary कैसे आप बढ़ा सकते हो we will be talking about that but today we are actually talking about some of the easiest I should say because the program is for beginners and I suppose that everybody should be able to speak this very language so here we are actually we are having some of the sentences एक एक सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कब कहाँ आपको बोलना है कहाँ आपको बोलना है और किस तरीके से बोलना है we will focus on first of all it will be regarding that it will be pronunciation we will focus on how to pronounce each sentence and the second will be fluency we have to learn how to speak fluently when we talk about speaking this very language from the day one I have told you people I have suggested you people that you have to work on your fluency your accuracy and most important is that you have to pronounce each word correctly and particularly regarding that if you are not going for any native speakers pronunciation at least you should be having that pronunciation which is well accepted in this very I should say this area Indian accent or this very Kashmir Valley which is most standard accent you should come up with that kind of pronunciation at least it can't be you can't have the original I should say inflection much and much on this very language so today we have these sentences I will be speaking these very sentences important बात ये है जब भी मैं ये sentence बोलूँ आपको भी ये बोलने ही बोलने हैं and the most important part is your repetition and how much practice you will do because from lecture 1 I am continuously talking about this very important thing about learning a language that practice is very much important and it is going to make a very big difference when we talk about a learner who is not practicing and a learner who is practicing more and more it will be definitely a greater and a bigger an aspect of speaking developing your speaking skills when you go for practicing these very things at your home or whenever you have got leisure time if you practice speaking this very English some small sentences that is really going to make you speak this language very fluently and very accurately in very I should say shorter period of time so today we have these sentences हमारे पास 5-10 sentences कुछ है तो हम इनको देखेंगे क्या sentence और कहाँ आपको बोलना है number 1 we have got this very sentences simplest sentence जब भी आप किससे मिलोगे ना तो वहाँ आपको क्या बोलना है how are you it is a question it is an interrogative sentence you need to ask somebody how are you okay how are you पहला sentence जब भी आप किससे मिलोगे आप कैसे हो
How are you? How are you? How are you? Okay, got it? The first easiest, I should say, sentence, and it is an interrogative sentence. ये एक क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं किसी से, and the simplest sentence आप किसी से पूछना चाहते हो आप कैसे हो, ठीक, how are you? Number second, we have the second sentence. We are talking today about the simplest sentence which you can just learn and you can speak from the right this very time, or from tomorrow you can just use them in your language. So there is no need to just go for more about that very crucial activities. You just learn it and you just start speaking these very sentences from your mouth from tomorrow onwards. So next one is, it is my pleasure. It is my pleasure. You have got it. It's my pleasure. It is shortened form. It's my pleasure. मेरे लिए खुशी की बात है. अगर इस कंस वनान है, काम कंस करान, अम पे वनान है शुक्रिया करान तोड़ इट इज माई प्लेजर. हम उसको कहते कि नहीं, ये मेरे लिए ही बड़ी बात है, ये मेरे लिए खुशी की बात है. इट्स माई प्लेजर. विल गो फॉर फ्लुएंसी. इट इज माई प्लेजर. इट इज माई प्लेजर. ओके. इसके बाद तीसरा सेंटेंस यूजन त्रेम सेंटेंस दैट इज ऑलराइट. अगर अस कंस वनो से कत करान पत वोन तम तिस कत बासो मे गई नी ठीक कह परवाह. दैट इज ऑलराइट. दैट इज ऑलराइट. ओके, गेटिंग मी? या अगर कुन साथ कुन कंस फ्रेंडस सत तुहद जरिए जीर सपोज चाय कप चवान, अस पे चाय, त्रेश चवान, अस पे त्रेश वस, तम पे सह थोड़ा करान गिल्टी फील, तमिस पे एहसास गसान मे गई थोड़ा गलती, अस हेको वोन कह परवाह. एंड इन इंग्लिश वी विल से दैट इज ऑलराइट. दैट इज ऑलराइट. दैट इज ऑलराइट. ओके, तो ये भी हो गया. इसके बाद तीसरा सेंटेंस त्रेम सेंटेंस, व्हाट इज गोइंग ऑन. व्हाट इज गोइंग ऑन. व्हाट is going on. What's going on? कशिर पर अगर कत करो, हे क्या चुनकस कर, अगर इस कंस फ्रेंडस वन या कुन ति शय, हे क्या चुनकस कर. What is going on? What is going on? What's going on? Okay, go for the proper pronunciation. What's going on? We have go for fluency. What is going on? Then we have got the next fifth sentence. I am on the way. 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 अगर हम किसी को फोन कर रहे हैं, तमिस कत करान, फोन करान, वन से तोड़ यसान जवाब दिन, या यसान तमिस जवाब दिन, बस वन वते बहुत पकान गाड़ी मन या पकान. What will be the sentence? तम साथ कुछ sentence वनोस, and the sentence will be like this. I am on the way. I am on the way. I am on the way. Okay, I am on the way. इसके बाद सिक्स्थ सेंटेंस जो हमारा है वो क्या है? डू यू स्पीक इंग्लिश. डू यू स्पीक इंग्लिश. इट कैन बी एनी अदर लैंग्वेज. अगर इस कंस पृछान क्या चे इंग्लिश तगान बोल, व्हाट विल बी आवर सेंटेंस इन इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश. एंड अगेन इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इट इज अ क्वेश्चन. ओके, डू यू स्पीक इंग्लिश. और यहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज के बारे में जो पूछना चाहते हो ना, जिस लैंग्वेज के बारे में भी पूछना चाहते हो, हम वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. डू यू स्पीक अरबिक. डू यू स्पीक अरबिक. डू यू स्पीक अरबिक. डू यू स्पीक इंग्लिश. डू यू स्पीक उर्दू. सो वी कैन चेंज द लैंग्वेज. लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा अगर इसको वनान जिससे तगानी बोल कस लैंग्वेज इंग्लिश. डू यू स्पीक इंग्लिश. क्या चे उर्दू तगान बोल. डू यू स्पीक उर्दू. क्या चे अरबिक तगान बोल. डू यू स्पीक अरबिक. डू यू स्पीक अरबिक. So this is the sixth sentence. We are talking about some of the simple sentences, but these are very simple. You just simply learn them today, this very time, and start speaking. There is no more, I should say, doing rehearsal and all that. You just learn them, learn the proper pronunciation, learn them where to you have to say these words or these sentences, and just you are ready to go speaking this way, these very sentences. Okay. Now we have got the next sentence. What are you doing? अगर इसको ये क्या सोच कर रहा, आप क्या कर रहे हो? What are you doing? Okay, somebody, it can be your friend, it can be anybody. आप क्या कर रहे हो? What are you doing? Okay, now we have to go for the fluency and accuracy. What are you doing?
What are you doing? What are you doing? Okay, what are you doing? आप क्या कर रहे हो? Again, it is an interrogative sentence क्योंकि question है ना, question है interrogative sentence. Then we will go for what are you doing? Our next sentence is stop kidding. Stop kidding. Important. Most of the time we can use that. अच्छा कोई वारिया लट use करे कम सच है ना stop kidding. अगर कहीं वनो या मजाक में कर, मस्सा कर मजाक. Stop kidding. Stop kidding. मजाक मत करो. Stop kidding. Stop kidding. Okay. एक पर ब्याख सेंटेंस. दूसरा जो सेंटेंस है इसी के रिलेटेड. I was kidding. I was kidding. I was kidding. मैं मजाक कर रहा था. Boss मजाक कर रहा. What will be the English sentence? I was kidding. I was kidding. I was kidding. I was kidding. Okay. दोबारा से बोलेंगे. अगर किसी का बोल रहे हो मजाक मत करो, stop kidding. किसी को बोलना चाहते हो मैं मजाक कर रहा था, बॉस मजाक कर रहा. I was kidding. I was kidding. I was just kidding. Okay. इसके बाद next sentence जो 10th वाला sentence. Again for the word kidding. Are you kidding? यहाँ पे it's just like an interrogative question rather there interrogative mark we have to go for. अगर किसी को क्या आप मजाक कर रहे हो, कोई आपको बोल रहा है कोई ऐसी बात आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, ऐसी किसने बात बोली कि आपको यू आर शॉक्ड, उस टाइम आप बोल रहे नहीं कश्मीरी अगर हम उसको बोलेंगे चुप मजाक कर रहा शायद ना ये है यकीन. एंड व्हाट विल बी द सेंटेंस? आर यू किडिंग? आर यू किडिंग? आर यू किडिंग? तीनों सेंटेंस जो है ना इसी वर्ड पे बने हैं. यू कैन सी दैट. किडिंग किडिंग किडिंग. पहला है स्टॉप किडिंग, मजाक मत करो. दूसरा है आई वाज किडिंग, मैं मजाक कर रहा था. आई वाज किडिंग. तीसरा है आर यू किडिंग, क्या आप सच बोल रहे हो? ये भी इसका मतलब है क्या आप सच बोल रहे हो, आप मजाक तो नहीं कर रहे हो. आर यू किडिंग? आर यू किडिंग? ओके. सो 11th ये भी छोड़ेंगे. यहां से दोबारा we will go for again these very 10 sentences. These are the simplest sentences I have chosen for first day क्योंकि आने वाले दिनों में हम थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पे अब लेंगे जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलने हैं. I will just come up with those sentences, then I will make you understand when to speak, where to speak and how to speak. So main part will be for you people to go for doing that very thing, applying these very sentences in a real situation. That is, you have to practice. You have to actually not practice, I would like to say you have to actually speak these very sentences in the real life, because these very 10 sentences are most of time we can just have these very 10 sentences we can use them in our daily life, because we can talk about these very things and we can definitely use these very sentences in our language. So the first sentence is how are you? आप कैसे हो? How are you? दूसरा है it is my pleasure. ये मेरे लिए खुशी की बात है. नहीं, ये मेरे लिए खुशी की बात है. We will say it is my pleasure. It is my pleasure. It is my pleasure. इसके बाद तीसरा है that is all right. किसी को आप बोलना चाहते हो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं है. That is all right. That is all right. That is all right. इसके बाद तीसरा चौथा जो है what is going on. अगर आप कहीं पूछना भी ये चाहते हो, एक तो किसी को बोल रहे क्या चल रहा है, या आप कहीं गए वहां पे 2-4 फ्रेंड्स थे वो कुछ कर रहे थे आपस में बातचीत, दे वर बिजी, लेकिन आप उनसे थोड़ा इनक्वायर करना चाहते हो एंड यू विल गो फॉर स्ट्रेट अवे दिस सेंटेंस व्हाट इज गोइंग ऑन. या कभी बच्चे आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उस टाइम भी ये सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज व्हाट इज गोइंग ऑन. व्हाट इज गोइंग ऑन. नाउ वी हैव द नेक्स्ट सेंटेंस 5th I am on the way. अगर आप कोई पूछ रहे कहाँ हो और आप रास्ते में हो, चाहे गाड़ी में आ रहे हो चाहे पैदल आ रहे हो, लेकिन अभी रास्ते में हो, you can go with the sentence. आप इंग्लिश में उसका जवाब दे सकते हैं I am on the way. 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 इसके बाद छठा जो है नेक्स्ट वन वी हैव डू यू स्पीक इंग्लिश. जब आप किसी लैंग्वेज के बारे में किसी से पूछते हो कि आपको ये बोलने आती है इंग्लिश उर्दू एंड ऑल दैट, यू कैन से सिंपली डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक अरबिक, डू यू स्पीक उर्दू, डू यू स्पीक कश्मीरी. सो दीज विल बी द क्वेश्चंस. एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट आर यू डूइंग. सिंपल क्वेश्चन. अगर आप किसी से पूछे क्या कर रहे हो, यू विल come up with this English sentence what are you doing. What are you doing.
इसके बाद नेक्स्ट जो है स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग, मजाक मत करो, मजाक बंद करो, मजाक मत बोलो, बंद करो, स्टॉप किडिंग। इसके बाद आई वॉज किडिंग, अगर कोई बोल रहा है मैं मजाक कर रहा था, मान लीजिए आपका दोस्त आया आपके साथ बात हुई, ऐसी कुछ बात बोली, यू आर शॉक्ड, यू आर शॉक्ड, आपकी फेलियर की बात की, यू आर फेल और समथिंग, जो कोई आप काम कर रहे थे उसने बोला नहीं वो फेल हो गया, आप उसमें कुछ नहीं कर पाए, देन he will say I was kidding, मैं मजाक कर रहा था, I was kidding, I was kidding। इसके बाद are you kidding, अगर आप यहां से वो वहां से कुछ बोल रहा है आपको यकीन नहीं आ रहा है, आप उसको आप शायद मजाक कर रहे हो, बोले are you kidding, are you kidding, या ऐसी वो बात बोल रहा है जिसपे आपको यकीन नहीं आ रहा है, आप क्या बोलेंगे, तुम मजाक शायद कर रहे हो, क्या आप मजाक कर रहे हो, are you kidding, are you kidding? So dear friends, these were some of the 10 easiest sentences I have chosen for the first day, because I kept in mind that most of you are beginners, you are yet to speak this very language. If you have already I should say used these sentences in your daily life, that is very good, but if you have not used these very sentences until this very day, because we are in the lecture 18th of this English language program, I request to you that from today you just practice these sentences, you can just watch this video again and again, and then from tomorrow, I would like to say from even this very time, you can just start speaking these very sentences with your friends, with your siblings, or all or someone who may be available to you people, you can just speak these very sentences. I have chosen these very 10 sentences because most of the time we can just speak these very sentences. These are related to our day-to-day life. So we can speak them very, I should say, in a proper manner with good pronunciation and all that. So it will be a good start to speak this very language. So I do believe that from this very time you are gonna speak these very sentences, and you will feel more confident regarding this very language, that is speaking English language. And the last sentence which I have not touched yet, it is see you soon। अगर आप किसी को बोलना चाहते हो जल्दी मिलेंगे, हम जल्दी मिलेंगे, आपने कन्वर्सेशन की, उसके बाद अब लास्ट में आप एक दूसरे को मानो वहां पे यू आर जस्ट having that very goodbye sign, and you will say him see you soon, see you soon, जल्दी मिलेंगे, see you soon। तो वही मैं यहाँ पे 11th sentence is see you soon, तो मैं भी यही आपसे बोलूँगा see you soon tomorrow at 7:40, because due to this salah नमाज के वक्त आज थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो 7:40 से कल हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। I will be live on 7:40 from tomorrow, except Sundays we will be live again at 7:40 regarding this very program, that is English language course or English language and personality development course. I do hope that you will practice these 10 sentences right now, and from tomorrow you will be speaking these very sentences. So we will be meeting tomorrow again on this very channel live at this very time, that is 7:40 p.m. Till then, take care. Allah Hafiz.